So very good evening student, welcome back to my channel again. So student, today I am here with the same topic that we have started in physics, that is equation of motion, and we have started the derivation, like how to derive the equations of motion. So that time we have done with alternative method, like with formula using acceleration and all. Now today we are going to discuss the same thing we are going to derive, but with the help of a graph. This is a graph in which you can see the graph is in between v and t, v versus t, that is velocity versus time. How we are going to just derive the equation? So we will just find out the slope for the first thing. Okay? We will find out the slope for the first thing. So if you see the slope, then you will come to know that this is BC. So slope, first equation, we will find out the slope. So slope is nothing but y upon x. Okay? So what is y in this case? Before starting the equation, I will tell you. The body is at rest, so the velocity will be u. This is the initial velocity, but when it attains some velocity, that is when it is being accelerated, so it start moving like this. So the line will be starting from this part. ठीक है? यहाँ से start हुआ है A से B point तक. ठीक है? So this is your y and this is your x. So slope is y by x. That means this is BC upon, you can say, AC. Now how to find out this BC? For this BC, what we will do? BC means if this is V, this is also V. Okay? And if this is U, this is also U. So this part will be V minus U. Total में से U को minus कर दिया. So in this case, we can write this is V minus U upon, if this is T, this is also T. ठीक है? ये भी क्या हो जाएगा आपका? T हो जाएगा. ठीक है? तो this is V minus U by T. And this is what? Acceleration. So from this slope, we will get acceleration. So when we cross multiply it, this will become V minus U. V is equal to U plus AT. So from the graph, by the help of the slope, we can derive the first equation. Now what about the second equation? ठीक है? यहाँ से हमें velocity versus time के बारे में relationship समझ में आ रही है. Now for the second equation, what we will do? If you will see this figure, the O, A, B and D, this is a kind of trapezium. So what we will do? We will find the displacement by finding the area of this trapezium. ठीक है? So for second case, what we will do? We will find the displacement. ठीक है? हम लोग यहाँ पे find क्या करेंगे? Displacement को निकालेंगे with the help of area. So area of O, A, B, D. This is a trapezium. So in this trapezium, you can see there is one triangle and there is one rectangle. So what we will do? We will just add the areas of this triangle and this rectangle. So this becomes area of triangle ABC plus area of rectangle. This is OACD. So area of rectangle, triangle, this is right angle triangle. So half into base into height. So half into base, what is the base? AC. And what is the height? This is BC. Now for this rectangle, length into breadth. That means length is OD. Length is OD and then multiply by CD. Now just substitute the value. What is the value of AC? अगर ये T है तो ये भी T हो जाएगा. हम लोग यहाँ पे T लिख देते हैं. Now for this BC, what is BC? V minus U. हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं V minus U. ठीक है? प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारा? नेक्स्ट वैल्यू है हमारी OD. What is OD? OD is T and then CD is what? CD is this one. ठीक है? अब हमारा यहाँ पे S निकल के चल रहा था. अब यहाँ पे बताइए क्या आएगा? This is UT plus half into T and V minus U. अब यहाँ पे एक ट्रिक है. हम एक्सीलरेशन को अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे V माइनस यू की जगह कुछ लिख सकते हैं क्या? AT लिख सकते हैं. ठीक है? V माइनस यू की जगह AT लिख सकते हैं. तो हम यहाँ पे वैल्यू को निकालें. सो दिस विल बिकम हाफ इंटू T इंटू AT. सो व्हाट इट बिकम्स UT plus half AT square. So this is the second equation that we have derived from this graph. ठीक है? Now the third thing which is left is
अनदर इक्वेशन दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वो भी हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, सेम एरिया निकाल करके, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल कर ही हम लोग यूज कर लेंगे। बट यहाँ पे ना फॉर्मूला आपको याद होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। यहाँ पे भी ना वी विल गेट द displacement from this area, so this becomes half into, for parallel side will be OA and BD, OA and BD, and what will be the height? Height will be this distance, है ना, तो ये हो जाएगी आपकी OD। so यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, हाफ, what is OA? OA is U, what is BD? BD means this whole V multiply by OD, OD का है T, ठीक है। अब आपको v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लाना है। यहाँ पे क्या करेंगे, t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, v माइनस यू बाय ए आ जाती है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको जरा यहाँ पे इनको वैल्यू को पुट करें तो व्हाट वी विल गेट, यहाँ पे t के इन प्लेस में वी विल राइट v माइनस यू अपॉन ए, दिस a, दिस 2 एंड दिस s क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, सो वी विल गेट 2as, और यहाँ से a प्लस बी, a माइनस बी, दिस इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, which will further becomes v square equal to u square plus 2as. So student, this was equation of motion with the help of graph. This is one of the most important topic, most important, मतलब इससे पहला वाला जो मैंने डेरिवेशन कराया था that is by alternative method, but this is by graphical method, और एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है, कोई भी एक इक्वेशन डिराइव करने के लिए आपको बोल सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट, आई होप यू हैव लाइक माई वीडियो, ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। If you have liked it, please like, share and subscribe. Thank you so much.